Hey guys, this is me Rabi here. This is me Azu here. Guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आजुराबी चैनल को ज्वाइन कर लो और साथ ही साथ हमारा व्लॉगिंग चैनल है बात नेम आजुराबी व्लॉग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो भी जाकर ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। टाइटल आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है ऑब्वियसली द किंग कोहली, लेकिन उनकी लाइफ चेंजिंग स्पीच है जिसके अंदर वो अपनी तरह इमोशनल स्पीच भी हो सकती है। तो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं वो सुनते हैं और देखते हैं और अपने किंग कोहली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। Really, like the amount of stress it brought onto him mentally was huge. So he had a stroke, he had a clot form in his brain, and this happened around 2:30 or 3 in the morning, and we all woke up and we had no idea what to do, and he was gone by the time we woke up, and I literally saw him take his last breath in front of me. So he used to do online share trading, and that was something that became quite a big thing back then when in 2006 then his online share trading account suddenly crashed. So one transaction went really bad, and all the transactions that he'd done before that and whatever he had accumulated sort of went down in a go. So he really the amount of stress it brought onto him mentally was huge. So he had a stroke, he had a clot form in his brain, and I was coming back from practice, and I reached the house, and then my cousin's sister was there, and I asked her where everyone is, and she's like, no, they've just gone for a regular checkup. So I asked her where they are. She told me this place, and I was like, take me there. So we went there, and then I saw him, in a situation that I'd never seen him before. Because it was a stroke in the brain, he wasn't able to react in the normal manner, So I saw him like that, and then they took him to the operation theater, and then it was a very difficult time because they did the operation, then he came back home, and then he was in rehab, but I saw him, left side of his body got paralyzed, left side vision also got compromised, and eventually after a couple of weeks of rehab, he got a cardiac arrest. Actually, I was playing a game, and we were playing one of these 4-day games, which used to happen at the first class level, and I was supposed to resume batting the next day, and this happened around 2:30 or 3 in the morning, and we all woke up and we had no idea what to do, and he was gone by the time we woke up, and I literally saw him take his last breath in front of me, and I tried to pump his chest and all that, nothing worked, and then there were a few doctors around in that area that we lived in. We went to their place. No one opened the door because it was 3 in the morning. We couldn't get any response, and then we drove him to the hospital. But by the time they tried electric shocks and everything, all those kind of things, but nothing worked. He couldn't recover at all. So my sister and my brother and my mother, they all broke down, and funnily enough, I couldn't cry at all. There was no emotion coming out of me, and I just became blank. I couldn't register what just happened. And then I called my coach in the morning, and I told him what had happened, and then he asked me, what do you want to do? I said, I want to go and play. For me, leaving a cricket match was something which was not acceptable, regardless of what happened in life. Not going to a match was not an option I ever had, or I couldn't register that option in my mind. So I left the house. I hadn't cried at all, nothing, no emotion, and my family was actually feeling a bit nervous looking at me because I was showing no emotion, and everyone was like, crying, and they were emotional. And then I went to the game, and I picked up a friend of mine again, and I told him what had happened. He thought I was joking, he didn't believe me. We kept going, we reached the stadium, and when we reached the stadium and I sat in the change room, and he told everyone what had happened. So when everyone came around me to tell me, we're sorry for you, and that's the time I really broke down, and that's the time all that emotion came out, and I don't know why. I was upset because the umpire in the game made a wrong decision, and he gave me out when I wasn't out. And I was upset because I couldn't be there till the end to make my team win the game. And I was really upset about that. Now I feel like it was probably the most impactful thing that happened in my life. Because I remember that day, I came back from the game. After I got out, I came back to do the cremation and all the rituals that follow. And I remember telling my brother specifically that
I am going to play for my country, and I am going to play this game at the highest level, and there's nothing else in life that can distract me anymore. Because it was my father's vision as well. He wanted me to, play at the highest level, and he was really, really keen on me playing at the highest level as well. So I remember making that promise to my brother, and then everything in life became second priority after that incident, and cricket was the first priority. So guys, this was a bit emotional. Not a bit emotional, Very emotional. pretty much emotional. But the thing is, the show must go on. और वही विराट कोहली ने किया, बिकॉज हम जैसे लोग ना हो, खुदा ना खास्ता हो जाए, तो हम लोग तो शायद ना उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाए, लेकिन उसका जो विराट कोहली का जो था कि मैंने आई हैव टू प्ले क्रिकेट, और उसने उनको भी अपने फादर को उस टाइम पे छोड़ के, मीन्स ही डाइड, बट वो चला गया, क्रिकेट मैच कंप्लीट किया, और फिर आया, फिर बाकी जो भी क्रीमेशंस की जो भी चीज़ें होती हैं डेथ के बाद, वो कंप्लीट की रिचुअल्स होते हैं। तो लेकिन हिज डेडिकेशन, जो डेडिकेशन दिखाई है ना उसने, वो बहुत ज़्यादा है, वो हर इंसान के अंदर नहीं होती है, जो कि एक सिंपल सी बात है, हर इंसान में वो शायद ना जिगर ना होता है, लेकिन ही हैड दैट थिंग कि उसने वो जाके गेम कंप्लीट की, प्रायोरिटी सेट की उसके बाद अपनी, कि मैंने अब अपने मुल्क के लिए खेलना है, बिकॉज मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं हाईएस्ट लेवल पर क्रिकेट खेलूँ। तो उसने घर आके अपने भाई से भी यही कहा कि आई एम गोइंग टू प्ले फॉर माई कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अब आप सबको पता है कि वो कौन है, वो कहाँ पे है, वो क्या करता है। ही इज़ अ गेम चेंजर, ही इज़ द लेजेंड, ही इज़ द किंग कोहली। बहुत इमोशनल थी खैर विराट की स्पीच, लेकिन ये है कि विराट की ये स्पीच से ना बहुत इंस्पिरेशन भी मिलनी चाहिए काफ़ी लोगों को, क्योंकि ही एक्चुअली वॉज टेलिंग हिज साइड ऑफ स्टोरी, हिज पर्सनल साइड ऑफ स्टोरी, जस्ट टू इंस्पायर पीपल एज वेल, कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है ना, तो उसके लिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो पैशन होना चाहिए आपके अंदर। और ऐसे लोग ना बहुत कम पैदा होते हैं, लाइक आप समझ लें रेयर पैदा होते हैं ऐसे लोगों का माइंडसेट। ये माइंडसेट की सारी बात है, ये बहुत कम लोगों का होता है, हर बंदे का इस तरह का माइंडसेट नहीं होता। वी आर हम लोगों का एक सर्टेन साइकिल है जिसके अंदर हम लोग बचपन से लेकर अब तक चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर उस साइकिल में अगर कोई एक इंडिविजुअल ऐसा आपको नज़र आए जिसका माइंडसेट काफ़ी डिफरेंट हो अपार्ट फ्रॉम एवरीवन, तो वो ही फिर आप समझ लें कि स्टैंड आउट करते हैं इन सोसाइटी। तो ये एक बात होती है, ये आप लोग भी रिकग्नाइज करें अपना, आप लोगों की सेल्फ रियलाइजेशन और रिकग्नाइजेशन भी होनी चाहिए, जैसे कि जितने हम लोग हैं, आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप लोग भी देखें। अगर आप लोग किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं तो आप किस हद तक पैशनेट हैं, या आपका अपना सेल्फ रिकग्निशन है, वही आपको बता सकता है। तो विराट को उस वक्त इवन एट दैट पॉइंट, ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स जो कि आपके सबसे क्लोज होते हैं आपकी लाइफ में, अगर उनमें से कोई भी चले जाए तो आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए तो यू डोंट इवन, आपको ऐसा लगता है आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है सब, क्योंकि आपने बचपन से एक चीज़ देखी है जब से आप पैदा हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उसमें भी अपने आप को कंट्रोल करके, अपने माइंड को डिसिप्लिन करके वापस जाना, ग्राउंड में खेलना, प्ले करना, ये हर बंदे का काम नहीं है, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसकी प्रायोरिटी एक बहुत अनदर लेवल पर होती है, जिसने अपने आप, जिसको इमोशंस को कंट्रोल करना और हालात को कंट्रोल करना आता हो। ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते कि विराट जो है वो सैड नहीं होगा, वो रोया नहीं होगा, वो होगा, बट ही एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड अपने फैमिली को भी उसने दिखाया करेजियस, कि ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लाइक कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ही वेंट आउट एंड प्ले द क्रिकेट। सो दैट वाज द वेरी बिग थिंग, लाइक कमिंग आउट फ्रॉम अ ग्रेट किंग कोहली। बहुत अच्छा लगा सुनकर। हम सब लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए फ्रॉम विराट कोहली की स्पीच से। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, सो यू शुड बी वेरी मच डिसिप्लिन अबाउट इट। आपका दिमाग को आपको टेम करना है, माइंडसेट को प्रॉपर रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, बट इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, मैंने उसके लिए भागना है, मैंने उसके लिए जाना है। सो दैट वाज द थिंग गाइस, वी रियली एंजॉयड इट, और स्ट्रॉन्ग भी हम फील कर रहे हैं सुनकर उसके वर्ड्स कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर विराट कोहली। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपनी अगली वीडियो की भी रिक्वेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। मुलाकात करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।